enjoying at home. I, Mrs. Farah Mirza, And Mrs. Roshni Joshi. welcome you to the Independence Day Eve celebration. Children, today we are going to celebrate our auspicious day. Yes, we are celebrating our national festival, that is Independence Day Eve. India became independent after lots of hardship and sacrifices of our brave Indian freedom fighters. 15th August is an independent day in hearts of every Indian, and we celebrate with full spirit of patriotism. So before starting our program, let's evoke the blessing of Lord Almighty by reciting a prayer. I request everyone kindly please join your hands and close their eyes. Almighty God, bless our nation and make it true to the ideas of justice, freedom and brotherhood. Guard us from war and natural calamities. Make me a responsible citizen to fulfill my duties rightfully. Dear God, let my country progress by leaps and bounds and overcome all its shortcomings. Roshni ma'am, do you know how India gained its freedom? Yes, Parama. It was the struggle of great national heroes which courageously fought against the British and even sacrificed their lives to free our mother India. Oh, I would love to see how our great freedom fighters bravely stood against the British rule and compelled them to leave our country forever. Don't worry, Parama. I am going to take you back to the era. So, children, do you all want to come? Let's go. सुनो सुनो सुनो, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हमारे भारत देश से जुड़ी हुई है। इंडिया, माय कंट्री, इंडिया, माय नेशन, इंडिया, माय pride. India was a rich country with lot of resources. मेरे देश की धरती धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बात है जब हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। चारों तरफ हरियाली, लहलहाते खेत, चारों तरफ खुशहाली। उसी दौरान अंग्रेजों ने दस्तक दी। India started to fall. Poverty and slavery ruled our country. Britishers ill-treated everyone who stood against them and were not allowed to do anything without their free will. However, in the leadership of our leaders who fought back, like Mahatma Gandhi, father of our nation, I quote Mahatma Gandhi, "My religion is based on truth and non-violence. Truth is my God. Non-violence is means of realizing Him." This was our Mahatma Gandhi, and he always believed in peace and non-violence, and this is how he fought back Britishers. आजाद हिंद फौज के संस्थापक
श्री सुभाष चंद्र बोस, उनका ये स्लोगन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, गूंज उठी ये आवाज आजादी की लड़ाई में, कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। हमारी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, हिल उठे सिंहासन, भारत में आई नई सुबह, वह तान कर तलवार निकल पड़ी, गुमी हुई आजादी पाने को, दूर फिरंगी को करने चमक उठा सन 57 में वह तलवार, खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी की रानी थी, वो तो झांसी की रानी थी। फिर एक आवाज गूंजी, वो जोर से गरजी, मेरी झांसी नहीं दूंगी, मेरी झांसी नहीं दूंगी। इसी तरह से हमारे कई वीरों ने अपने प्राण अपनी मातृभूमि के लिए त्याग दिए। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे, फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन। और वो सुहाना पल आया जिसका बरसों से था इंतजार, गूंज उठी चारों ओर खुशियों की तेज हवाएं, ले आई ये सौगात। हमारे नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने तब कहा, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। And yes, this is the day we got freedom. That is 15th August 1947. Do you know, it was not easy for our freedom fighters who sacrificed their lives for our country to get freedom. Indeed, it was the day, 15th of August 1947, where our country, India, got independence. Yes, as we are celebrating 74th year of independence, let's take a promise to be a true citizen of having the uniqueness of respect for each other, the power to protect the unity and integrity of our country. I quote Dr. APJ Abdul Kalam, freedom is not free. Salute to Allah who has paid for it. Our Jawans who have sacrificed their lives for our national security, maintaining peace within the borders and having safe country. So, let us all feel the freedom today. Let's all say together, Inqilab Zindabad, Inqilab Zindabad. भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। Indeed, Roshni ma'am, my heart is filled with pride after watching this. Yes, and it feels more pride whenever we see our tricolor flag. Our national flag is the one of the best flags in the world. Yes, Roshni ma'am. And I would like to know more about the national flag. Farah ma'am, do you want to know more about our national flag? Yes. This is our national flag with 3 colors, and that is why it is called Tiranga.
in the center is blue in color. It stands for the 24 hours progress of our country. Wow, Farah ma'am, indeed. Our tricolor is the one of the best flag. It fills my heart with joy and pride. Yes. Farah ma'am, Independence Day is my favorite festival as it reminds me of unique, diverse culture we have in one nation. Yes, India is a beautiful land of diverse culture. Let's take a glimpse of this unique, diverse culture of our country with a beautiful song presented by our teachers. मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन शांति का उन्नति का प्यारे का चमन मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन शांति का उन्नति का प्यारे का चमन इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन ऐ वतन मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन शांति का उन्नति का प्यारे का चमन इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन इसके मित्र से बने तेरे मेरे ये बदन इसके धर्म तेरे मेरे वास्ते गगन इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन शांति का उन्नति का प्यारे का चमन Pray for India, pray for India, pray for India. Pray for India, pray for India, pray for India. मेरा इंडिया, अपना इंडिया. Pray for India, pray for India, pray for India. सारी दुनिया से है निराला इंडिया सबकी निगाहों का उजाला इंडिया किसको लगे ना किसी गैर की नजर चमके जहां में प्यारा प्यारा इंडिया करो अपना तो बस एक ही खुदा मिलके रहेंगे हम होंगे ना जुदा बहकाए हमको न कोई शैतान आओ मांग मिल के खुदा से ये दुआ करेंगे इंडिया अपना इंडिया Pray for India, pray for India, pray for India. Pray for India, pray for India, pray for India. You love India, I love India, we love India. Pray for India, pray for India, pray for India. गाँव शहर गली गली जाना है प्यार का पैगाम सबको सुनाना है प्यार कैदियों को है आजाद करता प्यार दुश्मन को भी माफ करता Pray for India, मेरा इंडिया. You love India, I love India, God loves India too.
He's gonna answer you. Pray for India, pray for India, pray for India. Mera India, apna India. You love India, I love India, we love India. Pray for India, pray for India, pray for India. Roshni ma'am, I also want to know what happened after we gained freedom and how do we celebrate it in our country? Farah ma'am, Independence Day is celebrated with full spirit of patriotism. Our national flag is hoisted all over the government offices, schools and societies. A cultural parade organized at Red Fort every year. Our armed forces have special performance to display. Oh, that must be a marvelous sight to see. Our armed forces work selflessly with utmost dedication and devotion. Be it a blazing summer or a freezing winter night, our brave warriors guard our country so that we can breathe freely in open air. Yes, Farah ma'am. So why don't we show our children the post-independence era and the heritage of our country? Happy Independence Day, children. India acquired independence on 15th of August 1947. After struggling for 200 years for freedom, India got its independence. Everyone remembers the sacrifice of the martyrs on this Independence Day. Various cultural events take place to celebrate Independence Day. On this day, the Prime Minister hoists the national flag at Red Fort. India celebrate Independence Day on 15th August every year, as it is on this day in the year 1947 India got its independence from British rule. Furthermore, we celebrate Independence Day to remember our freedom fighters because they were the ones who struggled for our country and sacrificed their lives. Many honors are distributed on this Independence Day. The Navy, Air Force and Army comprise the parade. This Independence Day is filled with patriotism to all the people. हमारे देश का नाम भारत है। हम भारत के नागरिक हैं। 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेजों से आजादी मिली थी। इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद आदि राष्ट्रभक्तों का योगदान है। इस दिन हमारे प्रधानमंत्री देश की राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर झंडा फहरा के राष्ट्र को संबोधित करते हैं। पूरा देश राष्ट्रभक्ति की भावना से भर जाता है। हर तरफ तिरंगा लहराया जाता है। बच्चे परेड करते हैं। विद्यालय में ध्वजारोहण होता है, जिसके द्वारा हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान को याद करते हैं और देश की रक्षा की प्रतिज्ञा करते हैं। विद्यालय में ध्वजारोहण के साथ ही राष्ट्रीय गान, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। स्वतंत्रता का मतलब है कि हमारा अपना संविधान है, जिसके द्वारा शासन व्यवस्था संचालित होती है। अपने देश में
अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। स्वतंत्र दिवस अमर शहीदों को याद करने का दिन है। उन शहीदों को जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है। हम सबका ये नारा है कि हम अपने भारत की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। बच्चों, हमें अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना है। Come on children, let's see the national symbols of India. National flag is called Tiranga. National emblem, lion, capital of Ashoka. National anthem, Jana Gana Mana. National currency, it's called rupee. National song, Vande Mataram. National game, it's called hockey. National bird, peacock. National flower, lotus. National animal, tiger. National river, Ganga. National fruit, mango. Come on children, now सारे let's जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्ता हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्ता हमारा हमारा। And now we have a special message from a very special person who is close to our heart. She is the one who always strives hard to make our school reach its pinnacle of success. Our very own dynamic and vibrant personality of our school. Our very own dear Miss our Headmistress Ma'am, Mrs. Kuldeep Kaur Ratan. Hello children, I'm sure you all are enjoying the online classes and having lot of fun. Today we are celebrating the Independence Day Eve online, and I want to wish you all a very happy Independence Day. I also take this opportunity on behalf of the New Horizon family to wish all the parents a happy Independence Day. I'm sure that we all shall overcome the hurdles that we are facing during this pandemic situation. So parents, be confident. We are surely going to come out with flying colors. Stay safe. Hello children, how are you all? I'm so glad to meet you all after so long time. I'm really happy. You are my strength. When I look at you all, I feel so glad because you are the gems, not only of our school, but you are the gems of our country. First of all, let me wish you all a very happy Independence Day. Let's all pray for our country. When you pray together, God listens, and together we can make our country a great country and strong country, and also knowledgeable and intelligent country. Would you like to do that? Yes, I know you all wish to do that. But on this occasion, let's all pray for this country. Every year we used to celebrate this festival with great joy and pomp in the school. We used to have cultural program, we used to march, we used to play on the stage,
we used to have varieties of cultural programs. Unfortunately, this year, due to the pandemic COVID-19, we are confined to our houses, but no issue. We can celebrate this year our Independence Day virtually and celebrate with great joy and pomp. Give my regards to your mummy, daddy, grandpa, grandma. Make them all happy. Be always a good and wonderful child. Let's hope we'll meet shortly and again play in the classroom, on the ground, in the play area, and make our school again vibrant. God bless you all. Jai Hind. Thank you, ma'am, for your warm wishes. So, children, I hope you all enjoyed this program. So children, let us pledge to make our country a better place. Let's pledge to be a responsible citizen. Wishing you all a very happy Independence Day. It's me, Farah ma'am. It's me, Roshni ma'am. Signing off now. So have a Penguin Kids Day. I now request all the parents to kindly rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव